Hello students, let us continue our chapter water. In the first module of our chapter water, we done the distribution of water in the world. Today what we will do is the ocean circulation, or we can say the ocean movements. This oceanic movements, the movement which we see in on oceans are of three types. The first one is the waves, second one tides, and the third one is the oceanic currents. So first of all, let us start from waves. When the water on the surface of the ocean rises upward sides and then fall, this alternatively this process is called waves. As you can see this thing here in this picture also, the rises of water, then fall of water, rises of water, fall of water. So here we see one, two, three, four waves coming towards the beach or towards the coastal plain. This is called waves. During the storm, the wind blowing at a very high speed from the huge waves, this may causes tremendous destructions. Not only because of this, because of earthquake also. That we will discuss later. In let us see the second picture here. Here we can see that this part, that how these waves eroded this part of the coastal plain or the rocks. This has happened during the high tide when waves cut down this part of the rocks. As I was saying that huge waves causes tremendous destructions, and this destructions was happened because of happening an earthquake, a volcanic eruption, or we can say that underwater landslides, etc., can shift a large amount of ocean waters. As a result, a huge tidal waves we see, and these huge tidal waves are called tsunami. A huge tidal waves called tsunami, which is approximately 15 meter of height. The largest tsunami ever measured is about 150 meter of height. 150 meter means a building of 40 to 50 floor of buildings. Class 7 students, you can understand this easily, so I am using Hindi also. Once again, वाटर में हमने जो ओशनिक करंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, जरा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इन हिंदी। वेव्स, टाइड्स और करंट्स, इन तीन तरह से हम लोगों को जो है ओशन के मूवमेंट्स और सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। पहला जो हम जैसे कि देख रहे हैं वो है वेव्स। वेव्स यहाँ पिक्चर में हमको साफ साफ नजर आ रहा है। वाटर जो है उसका ऊपर और नीचे जाना, ऑल्टरनेटिवली ये जो फॉर्म होता है ऊपर और नीचे जाने का लेयर्स का, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड वेव्स। जो वाटर के ऊपर होता है, ओशन के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है। यही वेव्स जब इस तरह से यहाँ रॉक से टकराती हैं तो वो यहाँ इरोजन भी करती हैं, जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में हमको नजर आ रहा है किस तरह से ये वेव्स इरोजन वर्क भी करती हैं। कई बार ये वेव्स इतनी ना होके इससे भी कई ऊंची हाइट ले लेती है, जिसको हम लोग ह्यूज वेव्स कहते हैं, या फिर इसको जापानीज लैंग्वेज में सुनामी कहते हैं। ये सुनामी है, इसे ह्यूज वेव कहते हैं, टाइडल कहते हैं, जो कि बेसिकली 15 मीटर हाइट होती है इसकी। पर अब तक जो लार्जेस्ट वेव एवर मेजर की गई है वो 150 मीटर हाइट की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 150 मीटर हाइट मीन्स एक बड़ी बिल्डिंग, जो कि 50 से 60 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, उससे भी ऊंची वेव। सुनामी ऑफ 26 December
2004. This tsunami happened just because of the earthquake occurred. This earthquake was measured 9, मतलब highest on Richter scale. As you can see here in this picture also, this earthquake was occurred here at this particular point near to the Indonesian island Sumatra island. At that time, this Indian plate, this is the Indian plate. This Indian plate went under this Burma plate. This is a Burma plate, so it went in Burma plate. We can easily understand this through this diagram. This plate is the Indian plate, and this Indian plate went under the this plate, that is the Burma plate, and the ocean floor displaced. This ocean floor displaced by 10 to 20 meter, and because of this a huge wave occurred. As you can see in this picture, this huge wave occurred, the first wave, and this wave was occurred here at this particular point. Slowly the height of the waves increase as this wave comes nearer to coastal area. A huge wave you can see here, and how this huge wave destroyed the whole city, coastal cities of the nearby areas of this particular point. As I told you that the ocean floor displaced by 10 to 20 meter. Now the speed of these waves is approximately 800 kilometer per hour. Think how much fast these waves. The average speed of these waves is also 700 kilometer per hour. This tsunami created a huge destructions, not only huge destructions but also killed more than 10,000 people of the cities and areas, the coastal areas of the Indian Oceans. Here you can see nearby areas are like this. I'll show you all these areas through this dark color. The Indian coast, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Only this part we can see here. This plate in the wave starts from here, slowly it goes towards whole sides. First this wave starts to Indonesia and other part. Let us flip through a map. Here in this picture you can see that the homes are, these are the homes, and the height of these waves are this much height. Think how much destruction these waves created. Here in this picture you can see that here is the island before the tsunami, and when tsunami came only this part of the islands left and the rest part of the island merged under the sea water. एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से हिंदी में. सुनामी, जैसा कि वो तो हमने डिस्कस कर लिया, एक बहुत बड़ी वेव होती है जिसकी हाइट 15 मीटर होती है नॉर्मली, पर लार्जेस्ट इतनी होती है. अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सुनामी जो कि 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में आई थी. ये दिन था, वो सुबह थी जिससे जब रात को 25 दिसंबर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करके लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे. और बेसिकली ये सब लोग जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते थे सी कोस्ट के आसपास कर रहे थे. इन्हें पता नहीं था कि इस तरह से वेव आ जाएगी. ये वेव्स बेसिकली क्रिएट हुई थी अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक जो कि इंडोनेशिया के इस पार्ट में आया था, जैसा कि इस मैप में आप देख रही हैं. इस मैप ने जो इंडियन प्लेट है, यहाँ पर ये जो मैप है, इस प्लेट को नीचे की ओर धंसा दिया और ये प्लेट एकदम से ऊपर की ओर उठ गई और लगभग 10 से 20 मीटर एकदम से झटके के साथ जब ये ऊपर उठी तो झटके के साथ इसने पानी को ऊपर की ओर फेंक दिया यहाँ पर. और ये पानी जो ऊपर की ओर गया तो झटके के साथ नीचे आया इस तरह से, फिर ऊपर गया, नीचे आया और एक वेव्स को बनाता चला गया. और ये वेव्स जैसे जैसे कोस्ट या लैंड के पास आती जाती है इसकी हाइट बढ़ती जाती है क्योंकि इसके सामने रुकावट आ जाती है और यहाँ इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यह एक सुनामी में क्रिएट हो गई.
इसकी स्पीड जो होती है 800 किलोमीटर पर आवर तक होती है। जब ये सुनामी आई थी तो इसने लगभग 10,000 पीपल्स जो कि इंडियन ओशन के आसपास के अफ्रीका, एशिया के थे, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के, उनको उनकी जानें ले ली थी। यहाँ देखिए ना, कितनी अच्छी तरह से हमको दिख रहा है कि एक वेव्स की हाइट कितनी ऊंची होती है। यहाँ पर ये वेव्स इतनी ऊंची हाइट पे जा रही है और इसका डिस्ट्रक्शन नीचे पिक्चर में नजर आ रहा है कि वेव्स सुनामी आने से पहले जहाँ ये एक अच्छा खासा बहुत बड़ा आइलैंड था, जब सुनामी आई तो सारे के सारे आइलैंड को सुनामी अपने साथ ले डूबी और सिर्फ इतना सा पार्ट जो था वो बचा रह गया, वो भी डिस्ट्रक्टेड पार्ट था जिसमें सुनामी आई थी और बाद में पानी पीछे की ओर लौट गया और इतना हिस्सा बचा रह गया। एक काम करते हैं कि हम मैप के थ्रू इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सुनामी ऑफ 26 December 2004 थ्रू अ मैप। दिस इज अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडिया, Europe. This is the Sumatra, the Java island of Indonesia, it's Brunei Island, and here it is the Australia. As we see that the earthquake occurred here in this part. Because of this, waves created like this. After 3 hours, a huge waves comes toward the coastal areas and hit. First, these waves hit the Sumatra island of Indonesia, then this part, that is the Singapore and Malaysia, Thailand, Bangladesh, the whole eastern coast of India, that is the Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and Sri Lanka also, Maldives, Seychelles, Mauritius, Yemen and Saudi Arab, Somalia, especially Somalia and Eritrea, and the other part like Zambia and other part of Africa. This is the speed, then it goes and hit India. जैसे जैसे सुनामी आगे बढ़ती है इसकी हाइट और ज़्यादा ऊंची होती जाती है और स्पीड भी बढ़ती जाती है और इसका डिस्ट्रक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। आई होप इस मैप के थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 24 दिसंबर 2004 की सुनामी ने डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। ये तो आज हमने सिर्फ एक ही मूवमेंट पढ़ा है सुनामी का, वेव्स, जिसको हम लोग वेव्स कहेंगे। आई होप वेव्स इज क्लियर। The other two movements or the circulation of waters are left, and these two movements and circulation of waters are the tides and the currents. That's all in this second part of the chapter. The rest we will do in our third part. Thank you. Even then, if there is any kind of problems, doubt, questions, or whatever you want, what else, what new you want, please comment to me.